Now selection of viscometer. So viscosity is one of the very important quality control parameter for your suspension, emulsion, and all the dosage forms. Okay? Selection of viscometer depends on the different parameter. So for Newtonian fluids, are those liquids which show Newtonian flow. For them, what is the rate of shear is directly proportional to the shearing stress. So single point viscometer is enough. सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर उनके लिए यूज किया जाता है. सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर इज यूज्ड फॉर वर्क एट अ सिंगल रेट ऑफ शेयर. तो ये विस्कोमीटर क्या है, इसमें एक आरपीएम जो होता है ना स्टरिंग का, वो फिक्स है, उतना ही आरपीएम फिक्स है. सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर. सो ऑब्वियसली फॉर न्यूटोनियन लिक्विड सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर इज यूज्ड. फॉर नॉन न्यूटोनियन लिक्विड मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर इज यूज्ड. न्यूटोनियन लिक्विड के लिए कौन सा विस्कोमीटर है, देखो फर्स्ट वन इज नथिंग बट द कैपिलरी विस्कोमीटर. कैपिलरी विस्कोमीटर, कैपिलरी विस्कोमीटर. Both dynamic as well as kinematic viscosity can be obtained. So this capillary viscometer is based upon the Poiseuille's law. Poiseuille's law, and it expresses the relationship of flow of liquid through a capillary viscometer. तो उसका एग्जांपल क्या है, कैपिलरी विस्कोमीटर का एक एग्जांपल है ओसवार्ड विस्कोमीटर फॉर काइनेमेटिक विस्कोसिटी. एंड अगेन suspended level viscometer एक होता है, that is for they both are the based upon the capillary viscometer. Kinematic viscosity is independent of the density of the sample, whereas dynamic viscosity is dependent on the density of sample. Falling sphere viscometer भी होता है इसमें, किसमें न्यूटोनियन के लिए ही होता है falling sphere viscometer. उसका कमर्शियल एग्जांपल है हॉपलर विस्कोमीटर. हॉपलर विस्कोमीटर अपने इसके बारे में देखेंगे. I have made the slides. Now Hopler viscometer will measure the viscosity in range of 0.5 to 20,000 poise. Hopler viscometer will measure viscosity in a range of 0.5 to 20,000 poise. Ranges important होता है. So remember for Newtonian fluid, so capillary viscometer is used. So in that Oswald viscometer, remember, then suspended level viscometer, remember, and falling sphere viscometer is there. So there are three viscometers for Newtonian: capillary, Oswald, suspended, and falling sphere. Now non-Newtonian liquid के लिए, for non-Newtonian liquid, apparent viscosity is measured. Apparent viscosity is determined at a several rate of shear to get a entire consistency curve. So that's why multi-point viscometer they are used. So example क्या होगा, cup and bob viscometer, cone and plate viscometer. Cup and bob viscometer and cone and plate viscometer. तो क्वेश्चन आपको वैसे आता है कि which viscometer is suitable for the measurement of viscosity of suspension. तो ऐसा बोलेंगे आपको, तो आपको कंफ्यूज होगा because suspension will show, सस्पेंशन देखो अगर कॉन्सेंट्रेटेड है सस्पेंशन तो डायलेशनलेस दिखाएगा, अगर फ्लोकुलेटेड है तो है ना प्लास्टिक फ्लो दिखाएगा. मतलब सस्पेंशन टर्म आ गया तो आपको ये की याद रखना है कि इट इज नॉट अ न्यूटोनियन फ्लूइड. नॉन न्यूटन है तो नॉन न्यूटोनियन के लिए विस्कोसिटी मेजर करने के लिए कौन सा लगेगा. सो ऑब्वियसली कप एंड बॉब विस्कोमीटर और कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर. इसका डायग्राम वगैरह आप बाद में देख लेंगे. नाउ कप एंड बॉब विस्कोमीटर, फर्स्ट इज कप एंड बॉब. इट इज अ मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर बिलोंगिंग टू कैटेगरी नोन एज अ रोटेशनल विस्कोमीटर. इसमें दो टाइप का आता है. फर्स्ट इज नोन एज कुवेट रिवॉल्विंग कप टाइप मैकमिशेल विस्कोमीटर. सेकंड होता है सरले टाइप रिवॉल्विंग बॉब टाइप स्टॉर्मर विस्कोमीटर. Disadvantage of this rotational viscometer is nothing but the plug flow. Now cone and plate viscometer, it has a disadvantage of above plus shear rate is constant throughout the inner sample being shared. Plug flow is not observed and small sample size is required. Easy to handle, maintain, and less time is required for temperature equilibrium. तो ये उसका एडवांटेज होता है. Then Brookfield viscometer. Brookfield viscometer is also known as a rotational viscometer. Brookfield viscometer is also known as a rotational viscometer. Construction of this is similar to cup and bob viscometer, and it is used for the evaluation of rheological properties of
सस्पेंशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। फील्ड विस्कोमीटर, फील्ड विस्कोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द rheological properties of suspension, क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। न्यूटोनियन लिक्विड will show the will obey the Newton's law, that is a shearing stress is proportional to the rate of shearing, that's why there is a consistency curve origin from center, okay. Slope is equal to fluidity, water method log hai now. Plastic flow, okay, it will not begin from the center point, it will take some stress, and once the applied stress will cause the yield value, then it will be linear deformation or linear flow, known as a plastic flow, okay. Pseudo plastic, if you apply stress, flow will increase, if you apply stress, flow will increase because decrease in the viscosity, known as a shear thinning system. Dilating flow, if you apply stress, it will increase the flow, so it will increase the volume and viscosity, so dilating flow and a shear thickening system, bulging out होगा किसमें, so it is one of the thixotropic behavior of the bentonite magma, 10 to 15% suspension in the water, so bulge will, you will get a bulge. This is known as the up curve, है ना, up curve, the flow will start from this point, और यहाँ से पॉइंट से इंटरसेप्ट कर दिया है, ये पॉइंट से यहाँ यहाँ जब स्ट्रेस आएगा तब फ्लो चालू हो जाएगा, लेकिन फ्लो ये बल्जिंग आउट दे देता है बाद में, रिकवरी जो है ना वो फास्ट होता है, दैट इज बल्ज। लाइकवाइज दैट broken penicillin will show spur, broken penicillin will show spur. Now you can see here types of flow system. So Newtonian flow system क्या होता है? Newtonian flow system, liquid that obey Newton law known as a Newtonian liquid, and okay, Newtonian liquid. So system follows the linearity and relationship. System will follow the linearity relationship and called as Newtonian fluid, adequately described by viscosity term. Term viscosity is used to describe the Newtonian liquid. एग्जाम्पल देखो, याद रखना है आपको, न्यूटनियन लिक्विड क्वेश्चन आ चुका है, वाटर, ग्लिसरीन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, हेक्सेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइल अल्कोहल, सॉल्यूशन ऑफ सिरप एंड वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कोलाइड, डाइल्यूट कोलाइडल सॉल्यूशन, बाकी सॉल्वेंट जो भी है, जितने भी है सब क्या है, न्यूटोनियन है, याद रखना है। और नॉन न्यूटोनियन सिस्टम, सो नॉन न्यूटोनियन सिस्टम material are analyzed in the rotational viscometer. Non-Newtonian system को दिखाता है colloidal solution, emulsion, suspension and ointments. उसमें आता है पहला plastic flow. First is a plastic flow. So this type of material is known as a Bingham bodies. The material which is showing the plastic flow, they are known as Bingham bodies. Question इसके ऊपर आ चुका है, आपको पहले बोला। This material do not begin to flow until shearing stress corresponding to yield value is exceeded. जब तक yield value जितना स्ट्रेस पास नहीं होता तब तक ये फ्लो नहीं होगा। तो yield value is important for the certain kind of dispersion. Yield value is indicator of your force of flocculation. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है in the suspension. So flocculated particles in the concentrated suspension of zinc oxide in the mineral oil. Suspension of zinc oxide in the mineral oil will show the plastic flow. Plastic flow का जो equation है वो चॉइस होता है। U is nothing but the plastic viscosity. Plastic viscosity is equal to F minus F divided by G. So F is nothing but the shearing stress. G is nothing but the rate of shearing. What is this F? F is nothing but the yield value. F is nothing but the yield value. Now pseudoplastic flow, shear thinning system. इसको क्या बोलते हैं अपन? Shear thinning system. Because if you apply stress, there is a decrease in the viscosity of the material showing pseudoplastic flow. Now this pseudoplastic flow is shown by polymer in the solution, exhibited by polymer in the solution. There is no yield value in this. Viscosity of pseudoplastic material cannot be expressed by single value. Viscosity decreases with the increase in the shear rate. Viscosity decrease होगा मतलब flow increase होगा. Now example, liquid dispersion of natural and synthetic gum like tragacanth, sodium alginate, methyl cellulose, carboxymethyl cellulose. So इसका equation होता है pseudoplastic flow, also known as a power law equation. Also known as a power law equation. Is a raised to n into rho g. Now dilatant flow, it is known as shear thickening system. इसको बोलते हैं shear thickening system. And if you apply if you apply stress, so their volume will increase, their viscosity will increase. They will raise the flow. Subtle suspension with a high percentage of solid.
dispersed solid, increasing the resistance to flow with increasing the sharing rate. जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया तो वो रेजिस्टेंस बढ़ाएगा. Such system actually there is increase in the volume when shared, therefore they are known as a dilatant. Example, starch powder in the water, deploculated concentrated suspension. Flow is inversely proportional to the flow is inverse to the plastic flow. मतलब ये dilatancy जो है ना ये shear thickening system है. इसको बोलते हैं अपन shear thickening system. इसको बोलते हैं अपन shear thinning system. ये जो shear thinning है इनके opposite dilatant. Now thixotropy means what? So isothermal and comparative slow recovery on the standing of material of which consistency has been lost through shearing force. तो thixotropy में क्या होता है? जेल सोल जेल ट्रांसफर जेल टू सोल एंड अगेन जेल म्हणजे जेल सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन. Greater the thixotropic, lower will be the rate of settling of particle. Greater will be the thixotropy in the suspension, lower will the rate of settling. मतलब ज़्यादा thixotropic behavior होगा तो suspension का stability क्या होगा ज़्यादा होगा. So it is shown by paint and plasters, bentonite magma gel, bentonite magma gel and petroleum. Anti-thixotropy GPAT 2019 में पूछा है. Also known as a negative thixotropy and undergo phenomenon known as a soul gel soul. देखो soul gel soul यहाँ पे क्या था जेल सोल जेल जी. Thixotropy मतलब क्या material will behave, it is a gel at rest, and if you apply stress it will become a, and if you remove the stress again it will become a gel. Gel soul gel phenomena is known as a thixotropy. Now उसके opposite में क्या है negative thixotropy. So in case of negative thixotropy क्या होगा फिर उसमें यहाँ पे soul gel soul phenomena. So it is shown by magnesia magma and suspension of clay 1 to 10% solid content. ठीक है एंटी थीक्सोट्रॉपिक क्वेश्चन इसके ऊपर जीपैट में आ चुका है नाइपर में. रिओपेक्सी मतलब जीपैट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है. सो विथ इंक्रीज इन द apparent viscosity with the time under constant sharing rate or sharing stress followed by gradual recovery and then when stress is removed, also known as anti thixotropy or negative thixotropy. मैग्नीशियम मैग्मा क्ले मैग्नीशियम मैग्मा यहाँ पे मुझे एक ऐड करना है जेल सोल जेल. बुक में तो ऑलरेडी करेक्ट है लेकिन ये यहाँ पे और टाइप ऑफ फ्लो एंड एग्जांपल. सो मटेरियल शोइंग टाइप ऑफ फ्लो एंड इट्स एग्जांपल. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन इतना कर रहा हूँ मैं आपको कि आपको फिट हो जाए. सो व्हिच आर द मटेरियल नोन एज न्यूट्रिएंट लिक्विड वाटर ग्लिसरीन बेंजीन अल्कोहल सिरप ऑफ सिरप सॉल्यूशन एंड वेरी डाइल्यूट कोलोइडल सॉल्यूशन. पिंगम बॉडीज का एग्जांपल क्या है? पिंगम बॉडीज मतलब मटेरियल शोइंग प्लास्टिक फ्लो. Suspension of zinc oxide in the mineral oil, then paints, printing inks, jellies, okay, flocculated suspension. Pseudoplastic flow कौन दिखाता है? Shear thinning system, natural and synthetic gum, polymers such as microcrystalline cellulose, sodium carboxymethyl cellulose, triacan sodium alginate and gelatin. The polymer in solution they are known as shear thinning system. Dilatant flow they are known as shear thickening system. So deploculated suspension having more than 50% solid content. Concentrated titanium dioxide suspension. Paste mostly show the high latency. Some show pseudoplastic. मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी तो अपने देखा न्यूटन के लिए न्यूटनियन लिक्विड के लिए कैपिलरी विस्कोमीटर एंड पॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर. फॉर नॉन न्यूटनियन कप एंड बॉब विस्कोमीटर एंड कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर. ठीक है. नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ विस्कोमीटर्स. कौन सा विस्कोमीटर किसके लिए यूज करते हैं? Capillary viscometer used for the Newtonian liquids and 1 point. Okay, the time required to pass between 2 points. It is measured. I will show you the Oswald viscometer, also known as the Oswald viscometer. It gives relative viscosity with the water. Relative viscosity in comparison with water. Kinematic viscosity based upon the kinematic viscosity also dynamic. It is based upon the Poiseuille's law. Then Pauling sphere viscometer used for the viscosity of Newtonian liquids again. Doppler viscometer क्या है? It is a commercial instrument based on this Pauling sphere viscometer principle. One time, okay, the time required to fall or the distance traveled by the ball from 2 points is measured. The time for ball to fall between two marks is measured accurately and is represent the
It is repeated several times at equilibrium temperature. इसका रेंज होता है 0.5 to 20,000 सेंटीग्रेड 20,000 poise. For best result जो time time required uh, to reach the ball should be less than 30 seconds. Less than 30 seconds. Cup and bob viscometer used for Newtonian fluid. Sample is shared between the space between the outer wall of bob and inner wall of cup, which in which bob fits. Torque is proportional to the viscosity. कैसा है बाद में दिखाता हूँ मैं. अभी ये नहीं समझ में आएगा जब तक डायग्राम में देखूंगा तब तक समझ में आएगा. कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर. इसमें फेरेंटी शेरले विस्कोमीटर. There is example of rotational cone and plate viscometer. Ultrasonic shear rheometer is used for analyzing the protein solution in the rheology. Intron capillary rheometer is there to measure. Okay? It measures the viscosity of, as a function of shearing rate and temperature, particularly at a high shear rate. Brookfield viscometer. इसका example है rotating spindle and T viscometer used for the rheological property of suspension. Now, again, you can see what is the viscosity of water. Viscosity of water is nothing but the 1 centipoise. Viscosity of water is nothing but the 1 centipoise. So viscosity क्या है? It is nothing but the shear stress divided by shear stress divided by rate of shear. So shear stress क्या होता है? Shear stress is nothing but the force per unit area applied it on a material to bring out the flow. That is 9 per centimeter square. Now rate of shear क्या होता है? Rate of shear is nothing but the denoted by G. So velocity gradient dV by dr, it is between two planes of the body that are separated by infinitesimally distance of 1 cm inversely. So viscosity is equal to F divided by G. Fluidity क्या होता है? Fluidity is the reciprocal of viscosity. Reciprocal of viscosity. जिसका ज़्यादा fluidity होता है उसका viscosity कम होता है. जिसका ज़्यादा viscosity होता है उसका fluidity कम होता है. Kinematic viscosity मतलब क्या? Newtonian viscosity. Okay, Newtonian viscosity divided by density. So viscosity divided by density is nothing but the kinematic viscosity. Density is density के लिए term होता है rho. Density के लिए term होता है rho RHO. और viscosity के लिए eta divided by rho. Relative viscosity क्या होता है? Ratio of viscosity of dispersion to the its medium. मतलब dispersed phase plus dispersion medium दोनों का भी viscosity कितना है? So viscosity of dispersion and viscosity of dispersion medium. Viscosity of dispersion divided by viscosity of dispersion medium. Then specific viscosity क्या होता है? 1 minus relative viscosity. Specific viscosity is nothing but the 1 minus relative viscosity. Relative viscosity है उसको एक में से माइनस करो जो इक्वेशन आता है उसको बोलेंगे अपन specific viscosity. Reduced viscosity, specific viscosity divided by concentration known as a reduced viscosity. Intrinsic viscosity, it is denoted by bracket eta. Y-intercept obtained by extrapolating the curve obtained by taking the reduced viscosity on a y-axis and concentration on the x-axis. And there is one equation known as a Mark-Howing equation. Mark-Howing equation is there with the intrinsic viscosity. Intrinsic viscosity के लिए ये equation होता है Mark-Howing equation. Mark-Howing equation. Y capital Y is small d. Are you getting or not? Or type of viscometer, the description in short and equation related to that. So first होता है आपका Oswald viscometer. So in this viscosity how it is measured? So time required to flow between 2 points. Oswald viscometer में कुछ ऐसा ये होता है देखो यहाँ पे एक पॉइंट होता है और यहाँ पे एक पॉइंट होता है. The time required to flow the fluid between point x and y is noted and repeated for the sample of which known viscosity is there. ना एक बार आपको दो सैंपल है आपके पास में आपको विस्कोसिटी मेजर करना है किसका? ग्लिसरीन का. आपके पास वाटर भी है एज अ रेफरेंस. वाटर का विस्कोसिटी आपको मालूम है 1 सेंटीपोज 1 cp. So water is taken as a reference and viscosity of glycerin is measured. Okay? Time required to flow between 2 points x and y they are noted and same is repeated for the sample or viscosity of which is already known. The sample under investigation also is done. It is based upon the Poiseuille's equation. ये उसका equation होता है it. Okay, eta is equal to pi r raised to 4 t into delta p. Delta p divided by 8 lv. तो delta p क्या है? Pressure head.
टाइम सेंटीमीटर स्क्वायर, आर क्या है, इनसाइड रेडियस ऑफ कैपिलरी इन सेंटीमीटर, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लो, टाइम रिकॉर्ड ऑफ फ्लो, एल क्या है, लेंथ ऑफ कैपिलरी, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग। इसके लिए बाद में उसका डेरिवेशन वगैरह करके ये इक्वेशन होता है। विस्कोसिटी इज कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन, रो 1 डिवाइडेड बाय रो 2 इज इक्वल टू सॉरी eta 1 डिवाइडेड बाय eta 2 इज इक्वल टू रो 1 t1 डिवाइडेड बाय रो 2 t2। तो eta 1 क्या है, विस्कोसिटी ऑफ नोन कंपाउंड, ये रो 1 क्या है, डेंसिटी ऑफ नोन कंपाउंड, मतलब वाटर के लिए वाटर के डेंसिटी और वाटर का विस्कोसिटी मालूम है, टाइम कितना लगता है उसका टाइम जो नहीं मालूम है वो अननोन सैंपल eta 2 rho 2 into T2. That's how you can calculate the viscosity of unknown compound, unknown solution. Now falling sphere viscometer. इसमें क्या होता है? There is one glass tube which is placed vertically. Sample is placed in the glass tube and you have different balls, either glass ball or steel ball. It is dropped into the liquid at once. And उसके बाद में you have to keep it aside to get an equilibrium. And once equilibrium of a temperature with the outer jacket is reached, then jacket and tube are inverted. पहले जिसमें डाला है तो बॉल तो नीचे आएगा, थोड़ा उसको रेस्ट करने दो, टेम्परेचर वो इक्विलिब्रियम होने दो, बाद में उसको इन्वर्ट करो, कैसे बाद में दिखा दो। So then you have to make the reading. Now ball is on the top after inverting the ball is on the top. Viscosity is directly related to the time taken by a ball to move from one point to another point. उसका रेंज होता है 0.2 0.5 to 20,000 centipoise, and for the best result ball having t less than or more than 30 seconds is used. उसके लिए इक्वेशन होता है ये t into sb minus sf। तो t क्या है, टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम वन travel travel time taken by ball to travel from one point to two point। sb and sf क्या है, specific gravity of ball and fluid। b क्या है, constant, it is a constant value given for a particular instrument by manufacturer। For accurate measurement for accurate reading use largest possible diameter of ball। तो accurate reading के लिए थोड़ा सा बॉल जो ना उसका डायमीटर जितना ज़्यादा रहेगा वो अच्छा रहेगा। रिजल्ट फॉर एक्यूरेट रीडिंग और रिजल्ट यूज लार्जेस्ट डायमीटर बॉल। इतना डिटेल में कोई नहीं लेता है, इतना सभी इंफॉर्मेशन है। नाउ नेक्स्ट वन इज कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर। कोन एंड प्लेट, तो इसमें कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर में सैंपल इज लोडेड ऑन द सेंटर ऑफ प्लेट। सैंपल से प्लेट जो होता है उसमें रखना है एंड इट इज रेज्ड टू द पोजीशन अंडर द कोन। कोन के नजदीक लेके जाना है। सैंपल इज शेयर्ड बिटवीन द स्टेशनरी प्लेट एंड रोटेटिंग कोन। इसमें पेरेंटी शिरले instrument is available commercially. Brookfield is also popular rotating viscometer for the quality control। तो इसका इक्वेशन होता है eta is equal to kv w divided by v। तो c क्या है, इक्वेशन यहाँ पे आया नहीं, कोई इक्वेशन ये नहीं है, दूसरा इक्वेशन। then cup and bob viscometer। cup and bob viscometer, a kind of rotational viscometer, it has a cup for holding a sample and bob appropriately positioned in the cup while either bob or cup is rotated and the torque of rotation is measured। ठीक है, torque of rotation is measured। उसका इक्वेशन होता है ये eta is equal to kv w divided by v। v is equal to nothing but the velocity or rpm or shear rate, then eta is nothing but the apparent viscosity, w is nothing but the weight on hanger, kv is a constant for the instrument। इसका इक्वेशन। applications of rheology in the pharmacy। so viscosity is very important quality control parameter for ointment, emulsion, suspension, capsules manufacturing, cellulose derivative. They are used to enhance the viscosity with the okay. And studying of rheology helps to decide or well to design the instrument for mixing, filling into bottle and flow through pipes। तो प्रोसेसिंग में किसकी प्रोसेसिंग में rheology इन्वॉल्व है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट for and processing efficiency of instrument। There is so production capacity of instrument and processing efficiency of instrument। So to decide the production capacity, to decide the production efficiency in the processing, so rheology is applicable। Rheology is also involved in the solid, so flow of powder in the tableting machine, capsule manufacturing, okay, packing of powder in the powder and granules in the
and that in that also another rheology. Now mixing of fluid, milling is hydration, passage of fluid through orifice, fluid transfer, physical stability, so that involves the rheology. Quasi solids, so in that spreading or adherence on the skin. तो यहाँ पे application of ointment, application of creams on skin, removal of cream from tubes, drug release from that involves the rheology. That involves the rheology. Okay, so just revise the thixotropy. उसमें है ना, thixotropy में क्या होता है, जेल टू सोल. जेल इज द रेस्ट, जो मटेरियल होता है वो जेल होता है एट रेस्ट. अपॉन एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस it will become a soul, it will become a soul, and upon removing the stress again it will become a gel, again it will become a gel, again it will become a gel. Thixotropic, in case of thixotropy it is a slow process, and in case of rheopexy it is a fast process. मतलब rheopexy and thixotropy they are the same. उनमें क्या है कि टाइम का गैप है. जेल सोल जेल है ना, जेल को स्ट्रेस अप्लाई किया सोल बनेगा, रिमूव किया जेल बनेगा थीसोटॉपी में, बट स्लोली. रियोपेक्सी में फास्ट बनेगा जेल. ओके, याद रखना. नेगेटिव थीसोटॉपी में क्या होता है, सोल upon application of stress will become a gel, will become a gel, and removal of stress will again become a soul. Gel soul gel phenomena is there in a thixotropy. Soul gel soul phenomena is there in a negative thixotropy, you have to remember. Okay, now this one is known as a Oswald viscometer. इसको Oswald viscometer बोलते हैं. The time taken to travel between these two points. लिक्विड जो भी है यहाँ से पोर इसमें रहते हैं, liquid of which viscosity is to be determined, you have to measure the time required to travel this from point X to point Y, and same thing you have to repeat for the water, because you know the viscosity of water. बाद में वो equation है. और this one is known as a falling sphere viscometer और Doppler viscometer. इसमें एक ट्यूब रहता है, ये ट्यूब ग्लास ट्यूब. इसमें क्या रहता है, लिक्विड इसमें रहता है, solutions under investigation और solution of which viscosity is to be measured. और बाद में यहाँ पे एक बॉल रहता है, ये बॉल ट्यूब में डिप करना पड़ता है. तो पहले इक्विलिब्रियम आने दो, एक बार बॉल नीचे आ गया, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, इसको रोटेट करो फिर से टाइम रिक्वायर्ड to travel ball from this point to this point is measured, that is related to viscosity. Now this one is known as a Brookfield viscometer. Sorry, this one is known as a cone and plate viscometer. Cone and plate viscometer. इसमें प्लेट है, इसके ऊपर क्या रहता है, सैंपल रखना पड़ता है आपको सस्पेंशन का, and then you have to raise this plate up to this cone, and cone will rotate at high speed, so it will stir. Okay, तो उसका जो टॉर्क है that is related with viscosity. Now rheological characteristic of biological fluid. तो न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से है, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल में, सो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्रोंकियल म्यूकोस जो है दे आर नोन एज अ न्यूटोनियन फ्लूइड. ठीक है, सो एज वाटर क्वेश्चन, उसका काम क्या है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, सो यू नो दैट इट इज अ शॉक एब्सॉर्बर फॉर द नर्वस सिस्टम. म्यूकोस, ब्रोंकियल म्यूकोस का काम क्या है, विस्कोसिटी इज इंक्रीज्ड इन केस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस. स्यूडोप्लास्टिक फ्लो कौन दिखाता है बॉडी फ्लूइड्स में, साइनोवियल फ्लूइड दिखाता है, टीयर दिखाता है, ब्लड दिखाता है, स्यूडोप्लास्टिक फ्लो. जीआईटी म्यूकोस क्या है, स्यूडोप्लास्टिक फ्लो, उसका काम आपको तो मालूम है क्या है. देन viscoelastic flow is shown by nasal mucus, then semen, cervical mucus and uterus humor. बायोलॉजिकल फ्लूइड में भी